हेलो स्टूडेंट्स जो मैंने बीईडी सेकेंड सेमिस्टर दवा जाऊँ से डिस्कसन करते किसी वीडियो पुणी आउे रिवाइज करवा किसी वीडियो तो आम डिस्कस करा आज तो आज डिस्कसन हो कौन चलो कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स लिखी कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स कौन तार नीड्स डिस्कस करा तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स मन देख शुण आमर जदि गोटे टीचर हम हेले तो स्कूल कॉम्प्लेक्सटा कौन पाई स्कूल कॉम्प्लेक्स काम कौन ये डिस्कस करा राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स वाज originated from the report of कोठरी कमिशन राइट कोठरी कमिशन गोटे कोठरी कमिशन 1964 and 66 it was mooted as an innovation in the school education फॉर स्कूल एजुकेशन गोटे कोठरी कमिशन अलर्ट करा कोठरी कमिशन जो या 1964-66 भितर कोठरी कमिशन या तो तार भर आम कौन करा दिस कमिशन रियलाइज दैट मॉडर्न ऑफ एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ एंड फ्रॉम द पल्सेटिंग डायनामिक सोसाइटी अराउंड अस तो आम भर स्कूल कॉम्प्लेक्स आम जिते गोटे स्कूल या ना ता भर सोसाइटी समस्त सब भेराइटर पिला पाठ पढ़ी पारे तो गोटे सोसाइटी डायनामिक एंड पल्सेटिंग सोसाइटी अराउंड अस लर्निंग शुड बी एट द चॉइस एंड पेस ऑफ द लर्नर्स यस से चॉइस पिला डिफरेंट चॉइस स्कूल चूज करेंगे स्कूल कैंपस भितर से समस्ते सब टाइप पिला मिसी रही पारे तो ता भर हम देखा जे से मेन जो से कैंपस स्कूल कैंपस मेन कारण कौन इट मस्ट स्टेम फ्रॉम रूट्स ऑफ सोसाइटी मेनली सोसाइटी सब लोक गोटे सोसाइटी समाज या स्कूल सब कैटेगरी लोक रही पारे सोसाइटी कोऑपरेटिव एफर्ट्स विल हेल्प अस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स ओके एजुकेशन कैन मेक its own contribution can make its own contribution to the development of individuals as well as being of society only when we can establish face-to-face relationship between the different school within easily accessible distances. This can be done only with the development of school as a complex. Yes, स्कूल गोटे कम्प्लेक्स है तो आम कौन डिफरेंट सपोज गोटे स्कूल छोट पिला पढ़ुं एलकेजी यूकेजी स्टैंडर्ड 1 2 3 5 6 7 पढ़ले 8 9 10 पढ़ले हाई स्कूल है कॉलेज है +2 है तो तादर भी किसी आम अदर ट्रेनिंग्स एजुकेशन भी तारे आड कर तो आम गोटे स्कूल कम्प्लेक्स से जो स्कूल कम्प्लेक्स कौन हो डिफरेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट तादे आटाच हो पार कौन हम ना फेस टू फेस आम डिस्कसन कर दैट इज एन वेलबिंग ए सोसाइटी ओनली वी कैन एस्टाब्लिश ए फेस टू फेस रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट स्कूल्स आउ डिफरेंट स्कूल्स आसबे आम सहित कनेक्टेड हो तो ये गोटे कम्प्लेक्स तैयारी अच्छे कौ जगार सब एजुकेशन डिपार्टमेंट रही पार से स्कूल कम्प्लेक्स सो द स्कूल कम्प्लेक्स इज ऑर्गेनाइज्ड बाय टेकिंग ए ग्रुप ऑफ एलिमेंटरी स्कूल्स high schools and training schools, technical schools, etc. together. These institutions functions cooperatively. These institutions that functions cooperatively. समझते मिलमिशी काम करे right? तो for the improvement of their educational standards हम कहले एलिमेंटरी स्कूल रहिबो हाई स्कूल भी रहिबो कॉलेज भी रहिला तो सेटा सब डिपेंडेंट गोटे एबे कोन बड़ बड़ कॉलेज होछि स्कूल नै किंतु से स्कूल कॉलेज तो आम कनेक्टेड भी हो पारे तो गोटे कम्प्लेक्स रहा दरकार राइट तो एजुकेशन कमिशन 1964 और 66 जो बाहर कले कोठरी कमिशन that is observed that such an organization would have the several advantages in the helping to promote educational advances. ओके तो क्वेश्चन यही टाइप आसो कौन पर कोठरी कमिशन के कोठरी कमिशन काम कौन तो दस पड़ो what is the role of कोठरी कमिशन देन आसो कौन क्वेश्चन दे एजुकेशनल जो स्कूल कॉम्प्लेक्स रोल कौन व्हाट इज द यूज ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स आम स्कूल कॉम्प्लेक्स कहीं तैयारी है ओके सो द फर्स्टली वी वुड ब्रेक the numbering of isolations number which each school functioned would enable a small group of schools working in a neighborhood to make a cooperative effort to improve standards, and it would enable the state education department to develop authority to functional levels. So the networking
of schools in school complex is expected to facilitate sharing and exchanging of resources and experiences. In this context, there is much importance of school complex. Okay, तो school complex रे हमें बहुत कथा शिखले पहले आउट रे कह दूसरे रिपीटिंग करू छी the educational commission 1964 and 66 which observed that such an organization would have several advantages in helping to promote educational advances को promote करिया पे इसको school complex करियला then firstly we would break the numbering isolation under this isolation under which each school functioned, right? And it will enable a small group of schools working in a neighborhood to make a cooperative effort to improve standards, okay? And it would enable the state education department to develop authority of functional level to functional सब अथॉरिटी फंक्शन करिवो सेही लेवल को इंप्रूव करिया पई से स्कूल कॉम्प्लेक्स देला टीचर माने बसिबे सब डिपार्टमेंट एरिया हो गोटे डिपार्टमेंट डिस्कशन हो तो सबुड़ा को अथॉरिटी माने से डिस्कशन करिवे राइट सो द नेटवर्किंग ऑफ द स्कूल्स इन ए स्कूल कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग ऑफ द स्कूल्स इन ए स्कूल कॉम्प्लेक्स is expected to facilitate sharing and exchanging of resources and experiences. In this context, there is much importance of school complex. Yes. तो स्कूल कॉम्प्लेक्स भितर नेटवर्किंग है सब छोट छोट स्कूल भितर नेटवर्क रही पार तो जदि आम कह एलिमेंटरी स्कूल देन आसला तुम से हाई स्कूल आसला एलिमेंटरी हाई स्कूल्स दैट इज डिस्कशन इज देयर एंड this relation between this elementary schools, high schools and also higher secondary schools that is a networking network what create gala bujhiyala then needs and importance what are the needs and importance ma'am dekha needs and importance kon rahila needs no first number one no isolation of the schools the school complex being the schools of an area together it will help to break the terrible isolations under which each school functions at present like with other schools in a particular area for raising the quality of education and organizing similar units throughout the country. It will enable a similar group of schools working in a neighborhood to make a cooperative effort to improve standards. No isolation of the schools. School like isolation. समस्त school गोटे सने कौन करे no isolation of the schools माने करे no isolation of the schools that is isolation माने गोटे isolation ताते के पास पर जाय isolation माने सेमते isolation नहीं जे आसीबो जीवो सब लोग जाय परिबे आसी परिबे एडमिशन कर परिबे कि गोटे जगह आउट स्कूल जाय परिबो दिस इज no isolation of the schools is isolation तेणु सेला इंपोर्टेंस कोन ना the school complex being the school complex brings the schools of an area together से गोटे स्कूल कॉम्प्लेक्स रे से डिफरेंट स्कूल पिला को सेठी डाकी परिबो आस परिबे बुझि परलो आइसोलेशन किछ नै आइसोलेशन बंग साइड पे कांथ बंद कर दवा तामरी भितर खाली पर कथा वार्ता नै सेम नै all schools the school complex brings the schools of an area together it will help to break and terrible isolation under which each school functions at present and like with other schools in a particular area for raising the quality of education to organize similar units throughout the country. Yes. तो गोटे जगह रे गोटे एरिया रे आमे दे तीनटा स्कूल भी हेई परबो स्कूल कॉम्प्लेक्स दे तीनटा स्कूल हेई परबो काहे समस्त मोटो होची व्हाट समस्त मोटो होची किंतु एजुकेशन को डेवलप करबा दैट इज आवर मोटो तो सही हिसाब रे द स्कूल कॉम्प्लेक्स देयर इज नो आइसोलेशन देयर सो in particular area different schools can develop so raising education it will enable the similar group of schools working in a neighborhood to make a cooperative effort and improve the standards yes सेमते किसी तो कई को अपोज करवा कथा नुहे गोटे एरिया रे दे तीनटा स्कूल हो वस्तु पहुंच देन शेयरिंग इंस्ट्रक्शनल वर्क्स नंबर 2 शेयरिंग इंस्ट्रक्शनल वर्क्स नंबर 2 that is the school complex provides a scope for sharing of instructional work among the different constituent schools the expert teachers of the complex may visit other schools teach and plan new educational experiments it will help to follow improved methods of teaching yes
तो गोटे स्कूल टीचर आउ गोटे स्कूल को जाकि किसी ना कि इम्प्लीमेंट कर किसी जिन एक्सप्रेसन कर से तार टीचर्स जहाँ किसी नुआ किसी जिन से ट्रेनिंग देके आसपार से फैसिलिटी अच्छी दुटा स्कूल कम्प्लेक्स रूल तो देन आसला शेयरिंग ऑफ मटेरियल शेयरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स sharing materials and facilities. The school complex can provide new teaching aids like projector, a good library, a good laboratory in each secondary school as a end of make them functionally available in all the schools in one area. गोटे एरिया रे सब स्कूल को हमें किछि that is हमें किछि मटेरियल दे करिया that is sharing of materials or teaching aids, right? Then as like cooperative efforts of the improvement. The different schools work in a close to coordination of mutual benefit. ताको भितर cooperation किन रहइबो. The different schools work in close coordination of mutual benefit. It will help for educational reforms and development of the country. It will help for educational reforms and develop the country, and it will mobilize both human and material resources for progress of education. It helps the schools to function in a small face-to-face cooperative group. Yes, so it will help. I mean, educational. The different schools work to close in coordination, mutual benefits, and it will help for educational reforms and development of the country. It will also help for educational reforms, development of the country, and it will mobilize both human and material resources for progress of education. Yes, the cooperative effort of improvement. એટલે કોઓપરેટિવ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ અમે ଦେଖ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆଉଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆମେ କ'ଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆଉଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଧର ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଆସିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଖାତା ଚେକ୍ କଲେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଟିଚର ଗଲା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଖାତା ଚେକ୍ କଲା ରାଇଟ୍ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଅପରେଟିଭ୍ ତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଆମର ହେଇପାରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଏଫର୍ଟ in service training the complex is the school complex टा आपण हे परिबो ए जो स्कूल कॉम्प्लेक्स करला मेनली टॉपिक थला स्कूल कॉम्प्लेक्स टा केते काम करूची स्कूल भीतर रिलेशन क्रिएट करूची सब सोसाइटी एकाडी करूची सब टाइप रो पिला बसी पाठ पढुछन तो दिस इज द स्कूल कॉम्प्लेक्स in service training the complex is able to facilitate to provide in service teaching to teachers and upgrading the less qualified teachers. The group of schools and teachers of one complex can get maximum freedom to develop their own programs. Under this program, the school will get much strength and will be able to make the system more elastic and dynamic. Yes, so the school complex can coordinate its work with the local communities and can derive much help from this source as possible. In school complex, we find every activity is confined to schools, but networking and instructions should be much broader based, not confined to schools alone. Rather, there should be education complexes as distinct from school complexes. So there is much needs and importance of the schools and educational complexes for strengthening of educational planning and administrations. Yes, गोटे स्कूल रे कन्फाइंड हो रहा अपेक्षा डिफरेंट तुम स्कूल पिला आउट स्कूल को जीव आउट स्कूल पिला तुम स्कूल को आसो तुम स्कूल पिला आउे स्कूल को गोटे कंपटीशन कर से आसो तो सब स्कूल भितर यदि कनेक्टेड हे तो डेफिनेटली एजुकेशन ग्रोथ हो दिस इज द रोल ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स तो दैट इज मेन कॉन्सेप्ट the recommendation of the various committee of commissions in NPE 1986 on educational complex ये एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स रे हमर गोटे स्पेशल कमिशन तैयारी थला दैट इज NPE 1900 that is your recommendation of various committee and commissions of NPE 1986 in educational complex the national policy on education NPE national policy on education 1986 सेटा गोटे तैयारी थला ओके तो डिस्कशन सला है तापर हम नेक्स्ट वीडियो रे हम पूरा आउ नेक्स्ट पार्ट जा अछि ताको हम पढ़ी शेष करबा ओके एटा को देखो मु जति पारुछि गोटे छोट छोट वीडियो करछि तो बसी कंप्लीटली देखिबो तार क्वेश्चंस गुडे देबी तो बसी करिवो हला प्रैक्टिस हे जिवो ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे यदि भल लागले निश्चित भाव सब्सक्राइब करो शेयर करो लाइक करो।